back to post match chat. हमारी शक्लों से थोड़ा सा लग रहा होगा कि आज थोड़े से बेहतर हालात है. मुझे ज्वाइन किया है आतिफ नवाज ने और अरमान किरमानी ने. एज ऑलवेज पहले तो बताती चलूं कल हुआ क्या है. कल भाई ट्रेंट ब्रिज में पहला T20 इंटरनेशनल था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में. T20 मैच तो जो था ट्रेंट ब्रिज को आई थिंक सेट ऑन फायर वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होगी बोलना. कल ट्रेंट ब्रिज वो सेट ऑन फायर बाय बोथ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान. 433 रन्स बने हैं कल, 16 विकेटें गिरी हैं, कैचेस हुए हैं, सब कुछ हुआ है कल. और थोड़े बहुत रोमांसेस भी हुए हैं, उस पर हम लोग जरा और तबसरे करेंगे. पहले शुरू करते हैं हम लोग फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच से. आतिफ, व्हाट वाज योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच? Yeah, there was so many great performances that I could pick up on. और in Pakistan ने जो मैच खेला, was amazing. So इतनी खुशी हुई थी देख के. लेकिन like the favorite performance, it's Liam Livingstone. Like unbelievably in that match, Liam Livingstone was the favorite performance. क्योंकि यार ये जो टीम है इंग्लैंड की, यार कोई भी दुनिया की किसी भी टीम के सामने आप 230 कर लें, वो नहीं कर सकते. कोई भी अपनी टॉप की इंडिया की टीम को ले आओ. I know I'm going to upset a lot of the subscribers of this channel by saying this, but India, I'm really sorry, guys. You're not going to chase 230. Even at Trent Bridge, 56-meter boundary, whatever you want to say, right? लेकिन ये इंग्लैंड टीम यार, इनकी इतनी दहशत है. 17 ओवर गुजर गए, 7 विकेट गिर, and it still looked like they maybe could do it. No Pakistani fan was comfortable with the win yet. So, and he played in a phenomenal innings. I was really, really impressed. ऊपर से उसके ऊपर डबल प्रेशर है क्योंकि उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पता नहीं उन्हें रखना है कि नहीं रखना, लेकिन उसके बाद I think he's been included. Again, if obviously I want to say so many people. I want to say Hasnan, I want to say Babar, I want to say, but I'm not, if I'm being objective, the best performance of the match was Liam Livingstone. Incredible century. ये मुंह क्यों हिला रहा है बे? क्यों? यार मुझे एक तो समझ में नहीं आती, ठीक है ना, लूजिंग 100 को आप इतना सेलिब्रेट हमेशा करते हो. यार मेरी बात सुनो, हारते हुए कॉज में बड़े लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लिविंगस्टन को अगर बड़ा प्लेयर बनना और फर्स्ट टीम में खेलना है, उसको ये मैच जिताना चाहिए था. इनको इस विकेट पे कोई मुश्किल नहीं था 10 रन ओवर बनाना, और हमने कोई ऐसी बॉलिंग भी नहीं की थी कि आप कहेंगे यार ओ माय गॉड ये कर भी नहीं सकते. इंग्लैंड का जिता हुआ मैच नहीं जिता पाया, इसकी कैसे आप परफॉर्मेंस हाईलाइट कर रहे हो? फॉर मी बताओ अरमान, टेल मी योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच. छोड़ो यार, छोड़ो, आपको अपनी बताओ. फॉर मी लिविंगस्टन ने तो बॉटल कर दिया, because if it was a पाकिस्तानी player, मैं कहता यार ये तो जीता हुआ मैच था, आप कब, at what point are you going to actually perform? तो हारे हुए कॉज को मैं कभी सेलिब्रेट ना करूं. पता नहीं आप लोग क्यों करते हैं. उस दिन बाबर का 158 को पूरी दुनिया ऐसे सेलिब्रेट कर रही है, उस दिन 56 उसने बना दिया, बहुत बड़ा उसने काम कर दिया. यार खुदा का खौफ करो, मैच जिताना है अपनी टीम को, कि यहाँ पे अपने सेंचुरीज और अपने स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाने हैं. अच्छा खैर, क्या सवाल क्या था? मोमेंट ऑफ द मैच? Your favorite performance of the match. Oh yeah, favorite performance of the match तो बाबर आजम के अलावा मैं किससे बोलूंगा? He played at a fast strike rate, proved me right that you know what, when he wants to, he can and will be the best batsman in the world in white ball cricket. Play at a fast strike rate. He proved all the doubters wrong in terms of all the criticism that he received. He needed that criticism because he's lost too many games at a slow strike rate for Karachi in the PSL and for Pakistan in ODIs. It's great that he's world number one. I don't care he didn't get 158. I love the fact he made, what did he make, 85 or something yesterday? But the fact that he batted with great intent, we used the power play very well. And actually Rizwan was struggling and he carried Rizwan through that difficult period as well. I thought it was superb leadership with the bat. Excellent. Babar was fantastic. Played the model openers innings in T20 cricket. हाँ, बाबर का इंटेंट शुरू से नजर आ गया था. कल तो स्ट्राइक रेट तो बहुत जबरदस्त था. ओवरऑल 173 के स्ट्राइक रेट पे बाबर ने बैटिंग कर दी. एंड आई थिंक शुरू में जो मोमेंटम था, रिजवान वाज स्ट्रगलिंग टू बिगिन विद. रिजवान पावर प्ले में भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था. और ये बाद में इंटरव्यू दोनों ने, रिजवान और बाबर की एक वीडियो आई है, शायद लोगों ने देखी भी हो, उसमें दोनों बात कर रहे थे. तो बाबर वो सेइंग कि मैं चाह रहा था कि रिजवान पे कोई प्रेशर ना आए, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है इनिशियली तो मैं अपनी शॉट्स खेलूं ताकि रिजवान फ्रीली खेल सके. सो यार, लेकिन दिस इज क्वाइट अ मोमेंट. अरमान जो है वो बोल रहे हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस थी फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच. आई थिंक दिस इज अनदर मोमेंट ऑन पोस्ट मैच चैट. दिस इज अ मोमेंट in itself on post match chat today. So ladies and gentlemen, you're witnessing a proper moment aaj. Okay, I'll let you speak. Let me tell you my favorite performance of the match. कल obviously bowlers के लिए बहुत ही वो था, एक flattest मतलब road क्या ही थी वो pitch. Everybody was like playing their shots on that pitch. फिर भी शाहीन stood out, player of the match भी था, 3 विकेट ली. But for me in particular,
आतिफ ने भी मेंशन किया, हसनैन stood out for me, and I personally felt कि कल हसनैन को प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए था. 4 ओवरों में एक मोइन अली की विकेट भी ली, उसके बाद 28 रन सिर्फ दिए, 6 डॉट बॉल्स थी, और ऑल्सो कंसिडरिंग कि कल हसन अली नहीं खेल रहा था. अगर हसन अली होता तो प्रोबेबली हसनैन बेंच पे ही होता. सो दिस इज अनदर लाइक another thing कि चलो उन्होंने अपना बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट किया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ऑल्दो हसन की बैटिंग हम लोग मिस कर रहे थे, अगर हसन होता तो शायद थोड़े से और रन्स बन जाते. But I feel Hasnain performed brilliantly yesterday, and he deserves all the accolades कल वाली performance के लिए. So yeah, my favorite performance was Hasnain. Also on paper, 31 runs बहुत बड़ी बात लग रही है कि पाकिस्तान won by 31 runs. But जो जिन लोगों ने मैच देखा है, जिन्होंने फॉलो किए, ये बहुत एक नेल बाइटिंग टाइप मैच था, क्योंकि सीसॉ साइड चल रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. So anyways, moving on from the favorite performance to the least favorite performance, Aatif, I'll put you on the spot. Least favorite performance, probably यार क्या कह सकते हैं. Like, I think it was really hard to pick because I really liked everybody's performance in the match. I think they all did quite well. I'm going to go least favorite performance was the player of the match adjudicating panel. Like you, I think they should have given it to Mohammad Hasnain. It's such an underrated bowling performance. क्योंकि उसके figures है, आप कहेंगे अच्छा economical ball किया है. Shaheen got 3 wickets, Shadab got 2 wickets. People look at the wicket column, but they don't understand those England batters were coming at Pakistan hard. Everything that was anywhere near the slot, they would swing. They know they get great value for swing. You get छोटी सी ground है, दोनों तरफ पे एक 59 meters है, एक जिससे depends who you believe is either 56 or 61 meters. Depends where they're measuring it from. I don't know who's got different measuring tapes in Nottingham. लेकिन बहरहाल, like, I just thought he bowled so well within himself. इंडिया की हम बात कर रहे थे पिछले साल, मुझे याद है इंडिया और पिछले साल नहीं, इस साल जब इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे थे, and Surya Kumar Yadav came in and he got a 50 in his first match. And there was another Indian player, I forget, who got 50 in his first match as well. Who was it, Armaan? You'll remember this. Who was it? Sorry, I was thinking about my moment of the match. एक्टर ना रिहर्स कर रहा होता है बंदा हर वक्त 24 घंटे अपनी लाइनों के बारे में सोच रहा होता है. So जो भी है. The other Indian player who got 50 on debut for India. Ishan Kishan, well done. Yeah, there you go. So Ishan Kishan, he got it. Well done. He came back and he got it. He missed the first clothesline. He came back from the other side of the ropes. अच्छा, तो उन दोनों की ये खास बात थी कि when they got their opportunity, they immediately made an impact for India. And Hasnain, as you say, he's been on the bench for ages. He's been touring for ages, and he's not got a game. I feel bad for Abdullah Shafiq, बेचारा पता नहीं कितने अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ बस झूले ले रहा है, खेल नहीं रहा. And Hasnain could have gone the same way, लेकिन he got the opportunity because of Hassan Ali's thigh injury. He came in and immediately bang on a length, And look, we were really harsh on Misbah and on Waqar in the previous video. I think it's important to acknowledge that Waqar's obviously done some work with Hasnain. He deserves praise for that because that was a stunning bowling performance. And people will talk about Shaheen, and Shaheen is very good, obviously. They'll talk about Shadab, and he came back strong. But it was really that Hasnain spell that put pressure on Bairstow, on Roy, everybody up top, where they couldn't get that massive impetus going early doors. And then the wicket of Moin Ali, what a catch, yaar. जो क्या कैच लिया था, रोमांस के बारे में बाद में बात करते हैं. उसको मोमेंट पे छोड़ देते. आतिफ, में अरमान आपके ऊपर आने से पहले, ये जो पाकिस्तान की टीम है, अभी जो पिछला हमने शो किया था, ऑब्वियसली ओडीआईज का रिव्यू था, लेकिन उसमें ऑल डूम एंड ग्लूम था. एंड ऑल्दो हमने ये बात भी की थी कि हो सकता है T20s में आके कंप्लीटली डिफरेंट पाकिस्तान नजर आए, एंड वी माइट बी इन फॉर अ सरप्राइज. बट व्हाट इज विद दिस टीम यार? 2 दिन पहले हम बोल रहे हैं कि मिसबाह वकार जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी क्वेश्चन मार्क है, प्लानिंग मिसिंग है, फलाना ढंगाना. हाउ डू वी एनालाइज दिस टीम, दिस पाकिस्तानी टीम? आप एक दिन एक ट्वीट करते हो, अगले दिन ये लोग आते हैं वो बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं, देन यू लाइक यार आपने वो बात की थी. मैं ये नहीं कह रही कि एक T20 के परफॉर्मेंस पे इस चीज को मैं मैया कर रही हूँ. ओवरऑल एज वेल एज अ पाकिस्तानी फैन, वी हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स एंड वी हैव स्पोकन अबाउट इट एज वेल कि व्हेन पाकिस्तान की they're like completely against the wall, जब सब कुछ all odds are against them, they somehow come out with their best performance. So I don't know, आप लोग comments में please बताओ कि ये चक्कर क्या है. पाकिस्तान टीम जो है, जब आप least expect कर रहे होते हो, they bounce back with something incredible. So yeah, just let us know in the comment section what's your take on this. So Armaan, what was your least favorite performance from this match? यार ये जो इनके ओपनर्स है ना, ये जो अपना मलंग है और जो रॉय है, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने एक्सपीरियंस होते हुए भी ये लोग स्पिन नहीं खेल पाते हैं.
मतलब कि Jason Roy just I'm by shy इतना बड़ा batsman इनका they needed him to go on. They, you know, when you're chasing a big total you have high expectations. इस बंदे को अभी UAE जाना है. He has to play against the Indias, the Pakistans, the Sri Lankas, the Bangladeshis, the Afghanistans. इतने बड़े-बड़े स्पिनर आएंगे और उसकी तबीयत खराब हो जाती है every time we take a pace bowler off. मतलब कि पेस आती है तो वो मारता रहता है और as soon as the spinner comes on, why by shy हिटे मार रहा है. So I think that glaring obvious weakness and the inability to show any ability to sort of use his brain and grind, for me I was disappointed because I have such high expectations. मैं सोचता हूँ यार ये तो इंग्लैंड की कौन सी है, ये फर्स्ट टीम है, सेकंड टीम में कौन सी है भाई, ये तो फर्स्ट टीम थी ना. अब तो सब मान गए कि पहली टीम के वर्ल्ड कप स्टार्टिंग ओपनर्स दुनिया के इनका नंबर 1 T20 बैट्समैन को हमने डक पे भी, I think he got a duck anyways, Malan yesterday, and Jason Roy looked like he was a bunny for any spin. And I mean, what was it? Shadab 6 and out. I mean, so irresponsible, really poor cricket. You know, I mean, it's a very high quality game yesterday. So by the way, when I'm saying my least favorite performance, it's quite hard to find somebody that you really didn't enjoy. But if I was to be critical, that's the area I would look at for England, where I really think that they lost the game, because once Malan and Roy lose their wickets so cheaply, I don't think they've got a chance. And by the way, I know Aatif earlier said that, you know, Livingston took it at the end and no Pakistan fan. I was completely comfortable personally. I didn't think they had a chance. Once Moeen Ali got out, and then Roy, I think, got out straight after him. And they such casual shot. Moeen Ali had a chance, got promoted yesterday up the order. They've been batting him very low. So bowling bhi nahi karate. They've completely messed him around. This England setup have messed Moeen Ali around. Top talent in white ball cricket. They don't have a set batting position for him. जब इनके reserves खेलते हैं तो उसे promote कर देते हैं. Bowler है उसके आगे, Livingston को आके bowling कराते हैं. They messed him around. But anyways, he had his opportunity yesterday. He wasted it. Roy wasted it. Malan wasted it. All three useless performances. चलो मलान फिर भी एक पे आउट हुआ था. जेसन रॉय ने कोशिश पूरी की थी. आई थिंक जब जेसन रॉय बैटिंग कर रहा था तो बहुत फील्स थी प्रॉपर कि यार ही वाज कनेक्टिंग द बॉल सो वेल. उसके बालों के रंग को तो चलो रहने दो, वो बाद में बात किसी दिन कर लेंगे कि बालों के रंग का क्या सीन है इसका और लिविंगस्टन का. बट लिविंगस्टन को सूट कर गया बालों का रंग. Anyways, my least favorite performance of the match has to be Owen Morgan. कल सब प्लेयर्स ने, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स भी जो आए उन्होंने कैमियोज खेले, सब ने, जिनसे नहीं उम्मीद थी उन्होंने भी खेले. आजम खान का कल डेब्यू बड़ा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि आजम खान ऊपर आके बैटिंग करेगा. That's another debate कि वो ऊपर आया क्यों नहीं आया. But for me, I think Owen Morgan has been out of form for a very long time now. 6 इनिंग्स इसने इस साल खेली है T20 इंटरनेशनल्स में और 61 रन सिर्फ बनाए हैं. 28 इसका हाईएस्ट था, वो भी इंडिया में लॉन्ग टाइम अगो. He couldn't even bring back his form against श्रीलंका. तो आप खुद सोच ले कि उस वक्त ओवेन मॉर्गन किस माइंडसेट में खेल रहे हैं. एंड जितनी बैटिंग डेप्थ है इंग्लैंड के पास और जितने हमें नजर आ रहे हैं कि इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, प्रॉब्ली कुछ मुझे कल ट्वीट्स भी नजर आ रहे थे जहाँ पे लोग बोल रहे थे मे बी ओवेन मॉर्गन इज द वीक लिंक राइट नाउ. नॉट द कैप्टन बट एटलीस्ट द बैटर ओवेन मॉर्गन. ही नीड्स टू फाइंड हिज फॉर्म रियली क्विकली, वरना हमें एक वीक लिंक नजर आ रहा है. सो या फॉर मी दैट वाज माय लीस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच एंड आई फील के ओवेन मॉर्गन माइट बी एबल टू कम बैक. पाकिस्तान जाने जाते हैं जो लोग फॉर्म में नहीं होते, जो लोग नए आते हैं उनको फॉर्म में वापस लेके आते हैं. सो यू नेवर नो अगले 2 T20s में क्या होगा. खैर, मूविंग ऑन क्विकली, हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर साहब टाइम रिमाइंड करा रहे हैं बार-बार कि वी नीड टू लाइक रैप दिस अप क्विकली आज. आतिफ, योर फेवरेट मोमेंट ऑफ द मैच? आई नो व्हाट इट इज बट स्टिल बस मुझे बता दो. Yeah, my favorite moment of the match was Azam Khan's boundary on his first. No, of course it wasn't. My favorite moment of the match. It was great though. Listen, it was really nice to see Azam Khan come out and hit a boundary on his first ball in international cricket. That was lovely. It was really sentimentally quite fulfilling. Like, obviously, my favorite moment of the match is the same as probably both of yours, which was the catch. You know, I mean, he fell into the arms of Sohaib Maqsood, and the way he cradled him. You know, as Moeen Ali pulls the shot, he goes high up in the air, the catch is taken, and he spears him. Any wrestling fans, but you know, when like Goldberg spears Brock Lesnar, that's what it was. I was on commentary with Jimmy Anderson at the time, and I said to him, like, this is like Goldberg spearing Brock Lesnar. He just looked at me like, who is Brock Lesnar? Who is Goldberg? Yeah, Jimmy, yaar, kuch jiyo thodi zindagi ko. Bahral, like, it's the way he caught him. It was really romantic. It was really brotherly, you know, because he came into him and then he cushioned his fall as he fell and wrapped his arms around him in delight. It was just such a beautiful image. And I don't know if you've been on Twitter. Har bande ne iski meme banayi hui hai. Like, there's everything going on. It was just not. It was nice because I tell you, even on a cricketing level, a great catch, good technique, good evasion, all that kind of stuff. Lekin, you know, Pakistan team की body language बहुत खराब रही है.
Like when I'm watching, I've got the best view in the house when I'm commentating. I can see that there's like hands on waist, hands behind his back, body language very negative. Even yesterday, generally they're defending 233. Why are you so morose? Like why are you so downbeat? But it was the rare moment of an uptick in body language. So I really like that as well. It's a bit promising as well because they've still got 2 games to come. England will definitely come back harder than. Just एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब कह रहे हैं first choice England team थी. England were messing about with that batting order. Let's not kid ourselves. This wasn't a first full strength England team. There's no Butler. There's no Archer. There's no Stokes exactly. So it's and the way they played Moeen Ali, I agree with Armaan. They messed him around a little bit, but I don't think this is a harsh truth. But I don't think Moeen Ali plays in England's strongest first 11 in T20 cricket. And they know that, and it felt like a very token inclusion in that side. So anyway, my moment is the hug. They had to be the hug. Your moment of the match. यार देखो आजम खान के साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है उसकी. अगर आप चौका नहीं कहोगे तो एटलीस्ट द क्विक टू दैट ही रैन दैट वाज वर्ल्ड क्लास. और कैमरा इतने बदतमीज डायरेक्टर हैं स्काई स्पोर्ट्स वाले. They kept on him throughout the 2 runs as well. It was like, can he make it? Of course he can make it. देखो we come in all shapes and sizes, and Pakistan has this beauty. Whether we have Sharjeel Khan or we have Azam Khan, the point of the matter is don't look at our size, look at our ability and our agility. Azam Khan hits a 4 on debut. What a temperament. Son of a legend, gonna be a legend himself. Subhanallah. That's my moment of the match. और इंग्लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं थी आतिफ, तो ये याद रखो मोहम्मद नवाज ने खेला, शर्जील खान ने खेला, हसन अली ने खेला, हमारे भी 3 लोग मिसिंग थे. इनको बोलो अपने 3 लाएं, हम भी 3 लाएंगे और इनका फेटा हम यूएई में भी लगाएंगे. Don't worry about England. It's all about Pakistan. Why are we talking about England? Forget about them. Their history. They've lost the first game. They'll probably lose the series in their backyard. Pakistan are the ones on the rise. They're the ones we need to talk about. England का टाइम आगे जा चुका है. I cannot wait जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, कमेंट्स आएंगे नीचे. अरमान को 2-3 हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं जो अरमान को जरूर कमेंट करते हैं, और जो अरमान ने एक बड़ी स्पीच की है ना उसके ऊपर 2-3 लोग तो जरूर बोलेंगे. एक मैच जीतो, और अभी पिछले मैच में देखो कैसे रो रहे थे, और अभी एक मैच जीते नहीं. देखिए गलत बात ना करें, मैं रोया नहीं था. मैंने आपको बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस दी थी उस वक्त भी कि पाकिस्तान ने क्या चीजें गलत की हैं. अगर बाबर हाई स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो पाकिस्तान जीतेंगे. We fixed our mistakes. We're a team that's developing. As Aatif said in the last show as well, ODIs haven't been a priority. For God's sake, it's a World Cup year. We shouldn't really be playing ODIs anyways. We played ODIs. We were in quarantine. We came out, didn't deal with the swinging ball, didn't deal with the strike rate. We got punished for our mistakes. England were the better team, hands down. But that doesn't mean that we should अगले मैच में आएंगे वापस. सुमित आनंद ना अपनी कमेंट तैयार कर रहा है अभी. Just remember, Sumit Anand is coming for you. Good. अरे सब करो कमेंट यार, मैं तो इंतजार करता हूँ. मैं जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ. जो कमेंट करेगा, एक प्रॉमिस है, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर. मेरी तरफ से पाकिस्तान जीते आज, बहुत खुशी है. अरमान ने मैं जल्दी से थोड़ी सी सीरियस बात कर दूं. अरमान ने आजम खान के बारे में बात की है कि वो 2 रन ले रहा था, थोड़ा सा कैमरा पैन हो गया. सोशल मीडिया पे भी थोड़ी सी बॉडी शेमिंग नजर आ रही है आजम खान को लेके. ये पहले भी हमने एक दफा बात की थी कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए. हाँ, हम उसकी फिटनेस पे जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि कल आजम खान जो है वो फील्डिंग कर रहा था. 1-2 मिस फील्ड्स भी हमने देखी, एंड वी सीन दिस इन द पीएसएल एज वेल कि आजम खान की फील्डिंग जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है. प्रोबेबली वी कैन क्रिटिसाइज ऑन हिज फील्डिंग. ही नीड्स टू इंप्रूव ऑन हिज फील्डिंग, व्हिच इज अ फैक्ट. हम एक फ्री राइडर जो है फील्ड में लेके नहीं चल सकते हैं. सो या ही कैन डू दैट, बट बॉडी शेमिंग इज अ बिग नो फॉर मी एज वेल. तो बॉडी शेमिंग प्लीज मत करें. क्रिटिसाइज जरूर करें, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जरूर मशवरे दें, बट बॉडी शेमिंग मत करें. माय moment of the match has to be what Aatif said as well. वो है ही मेरा भी moment of the match है. वो jaw dropping moment था. एक तो कैच पहले उड़ते हुए उसने कैच लिया, बाहों में जाके सोहेब मकसूद की गिर गया, सोहेब मकसूद ने पकड़ लिया. और आतिफ, I saw your clip as well. You posted it on Twitter, जिसपे commentary पे तुम बोल रहे थे कि this is like a rom-com scene proper. So yeah, I think icing on cake था वो catch. Overall भी कल जितने भी catches पाकिस्तान ने पकड़े हैं, considering what we've seen in the ODIs, massive improvement. Shaheen took a great catch on his own bowling. Shadab took a brilliant catch on the boundary. Haris Rauf ने एक और catch भी पकड़ा था. So I think कल बहुत ज्यादा improvement थी fielding में. So overall fielding भी एक moment of the match हो सकता है, क्योंकि अब्दुल मजीद जिनको हम उस दिन बोल रहे थे कि fielding के ऊपर काम करना है, तो I think he has done something right. जो टीम जो है एक अच्छे spirit में आई है, and they fielded well yesterday. So okay guys. Can I just add to that, Anam? Like I've seen them practicing before the matches as well.
Pakistan की team कम से कम match से, it looks like they're doing 40 minutes of high catches before every game. Not just this game, but every game. So it's not that they're not putting the practice in. They're doing it. I see them doing it. You know, all the commentators, the professional players that are around me always notice as well कि यार ये तो 40 मिनट से high catch कर रहे हैं, maximum 20 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट इतना time इनका coach लगा रहा है. I mean, obviously they needed that practice. Lekin there's some kind of mentality switch for Pakistan when they play 2020 cricket. I don't know what it is. I don't know if it's the shorter attention span, just the comfort, because Pakistan's played more T20 cricket than anyone else in the world internationally. But something just changes in their mentality, and all of a sudden, the things that would otherwise be dropped are taken. Thoda sa, cautiously optimistic hu ki aage hoga kya. I still, like, I'm standing by my 3-0 prediction, like that I gave after the first match. Lekin, England is a very canny team. They know the grounds better. Pakistan has the propensity to always surprise you. So I'm very happy, very excited. It's a very promising future. Lekin thoda sa apne aap ko कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कभी भी दिल टूट सकता है. तो हाँ, इसी नोट पे आतिफ प्रेडिक्शन भी दे दो. You already said 3-0. Pakistan's winning 3-0. So yeah, tomorrow कल लीड्स में मैच है. Armaan 3-0. Your prediction was also 3-0. इतनी बुरी तरह से हम हराएंगे ना कि it will feel like 5-0. बता रहा हूँ, 3-0 तो bright हो रहे हैं हम लोग. ठीक है, मैं I'll stick with what I said in पिछले वाले मैच, पिछले वाले शो में कि 2-1 से इंग्लैंड जीत रहा है सीरीज. तो maybe I have to stick with what I said. So yeah, I think England is going to come back pretty strong tomorrow at Leeds. So yeah, let's see. Well, they might, yeah. Like you said, Owen Morgan is not the kind of captain who, he's got a reputation for being ruthless. He doesn't like to lose any match, even if it is, an experimental development job. Like, they've just come out of isolation as well. That's the isolation with England. So, half of the team that played yesterday. So, but, they'll definitely come back strong. How will Pakistan handle being ahead in a series? This is a very rare kind of scenario. So देखने के मजा आएगा, देखते क्या होता है. तो हाँ, आप तो वहाँ पे होने वाले हैं. आतिफ को आप लोग कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हैं. कल आतिफ का टीवी कमेंट्री डेब्यू है. So all of you go on, wish him all the best for that gig. Congratulations Aatif. And in the meanwhile, भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट, जो दिल है. ट्विटर पे आओ, फॉलो करो. हम लोग जो है वापस आएंगे सेकंड T20 के बाद, और अपने कमेंट सेक्शन में हम लोग को जरूर बताओ कि व्हाट्स अप. Okay, people, from all of us three, we sign out. Over and out.